this is Sunny with my Bollywood body. फेस फैट या डबल चिन के बारे में आज हम बात करेंगे, बट बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, whatever is happening around the world, मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स के अंदर लीव सम प्रेयर्स फॉर इंडिया. सो यूज हैशटैग प्रे फॉर इंडिया. मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स के अंदर ना लिखना भूलें. जितने हमें कमेंट्स आएंगे या हैशटैग्स आएंगे, उससे हमें फायदा ये है कि जब भी कोई आज कल परसों जब भी कोई बंदा किसी भी कंट्री का हमारी वीडियो देखेगा, आप पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से हैं, हम सारे जो है इंडिया को अपनी दुआओं में याद रखेंगे. फेस फैट के बारे में बात करते हैं. मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी एक आधी छोटी सी वीडियो डाली हुई है. व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेस फैट. देखें, जोक्स अपार्ट, जो फेस फैट है या आपकी जो डबल चिन है, दो तीन रीजंस के करके होती हैं. सबसे पहला जो रीजन है दैट इज स्ट्रेस. सबसे बड़ा जो क्रिमिनल है इस चीज के अंदर वो है स्ट्रेस. अब स्ट्रेस जो हार्मोन है जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं, जब स्ट्रेस लेते हैं आपका कोर्टिसोल लेवल ऊपर चले जाता है. उसके करके आपकी बॉडी जो है वो पानी ज्यादा रिटेन करती है, आपकी एपेटाइट भी मर जाती है. नंबर वन क्रिमिनल इज स्ट्रेस. सो ब्रिंग योर स्ट्रेस लेवल डाउन. नंबर टू, ट्राई टू स्लीप. A lot of the time मैंने लोगों को देखा है वो सोते नहीं हैं. तो जितना आप सोएंगे, रात को आप 4 घंटे सो के उठें, as long as आप फ्रेश हैं, that's all that matters. लेकिन in most cases जो लोग हैं वो सोते नहीं हैं. So try again, वही बात होगी ना, स्ट्रेस जितना है तो उसके करके नींद नहीं आती. So bring your stress level down. Number 2, try to sleep at least 7-8 hours a night. Number 3, have a good diet. आप सब चीज कर लेते हैं लेकिन हम डाइट नहीं करते. यार कोई नहीं, आज तो चीट मील चलेगी, कल तो चीट मील चलेगी. नो, आपने गोल अचीव करना है. जैसे आपने कोई डॉक्टर बनना है, कोई PhD की डिग्री लेनी है, आप ये नहीं करते चलो 2 दिन नहीं पढ़ता, तीसरे दिन पढ़ लेता हूं. यू कीप स्टडिंग अंटिल यू अचीव द रिजल्ट. सो सेम गोज फॉर द डाइट, सेम गोज फॉर फेस फैट. जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं करते, ट्राई टू स्टिक टू दैट डाइट एज मच एज पॉसिबल. नंबर 4, वर्कआउट प्रॉपर्ली लोग नहीं करते. प्रॉपर्ली वर्कआउट मींस लोग क्या करते हैं, कार्डियो नहीं करते. कार्डियो करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं. दोनों वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, आप लड़के हैं कि लड़की हैं, आप दोनों मिला के करेंगे. वेट ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी जो है वो मसल टिश्यू ग्रो करती है, उसके करके आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपको ज्यादा भूख लगती है, so it's a cycle. कार्डियो के करके आप फैट बर्न करते हैं. सो दोनों चीजें अगर मिला के करेंगे, उसका आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा. सो सबसे पहला जो कल्प्रिट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपने काम करना है, दैट इज ब्रिंगिंग योर स्ट्रेस लेवल डाउन. उसके लिए ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट. गो आउट फॉर वॉक्स. यू नो, आप कहते हैं मैंने वर्कआउट नहीं करना, मैंने डाइटिंग नहीं. स्टार्ट विद वॉकिंग. जस्ट वॉक. ट्राई टू ब्रिंग द कोर्टिसोल लेवल डाउन, स्ट्रेस लेवल डाउन. उसके बाद आपने सारा कुछ कर लिया, स्ट्रेस के करके आपको फिर भी नींद नहीं आती. आई पर्सनली वेंट थ्रू डिप्रेशन. आई वेंट थ्रू सो मच हेडेक्स एज वेल. आई मीन पुट इट दिस वे, मेरा 1.5 साल से जिम बंद है. सो ऑब्वियसली देयर इज अ स्ट्रेस, देयर इज एक्सपेंस इन्वॉल्व, बट यू नो, फिक्र ना फाकर जट्टा तक आकर ठा करके गोली चला दी, केयर नहीं करी थी. सो आप भी इसी तरह ठा करके गोली चला दें. आई मीन टू से ट्राई टू टेक योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं. जिंक हेल्प्स अ लॉट. अगर आप सोने से पहले जिंक लेंगे या जिंक एंड मैग्नीशियम लेंगे या खाली जिंक लेंगे, it's gonna help you a lot. आपकी डाइट के अंदर गुड कार्ब्स होने चाहिए, डिसेंट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट, फाइबर. ये सारी चीजें मिला के एक गुड बैलेंस डाइट लें. स्ट्रेस कम करें. स्ट्रेस कम करने के लिए वॉक करने की कोशिश करें, वर्कआउट प्रॉपर करें, वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो मिला के अपनी डाइट को अच्छे से अच्छा रखें. ये जितनी फब्बे फुब्बे बाहर है ना, लंडल पप्पी सी एक्सरसाइज है, मुंह में कुर्लियां ले लो, चिंगम चबा लो, इंज कर लो. पिछले दिनों का मॉडल वो टिकटॉक पे वायरल हुआ था, मुंह में उसने वो 32 सी लीड करी जाता. और इस तरह इससे कुछ भी नहीं होता. जस्ट बैलेंस्ड डाइट. मेरे बेतहाशा कोचिंग वगैरह के क्लाइंट हैं, बेतहाशा जिम के क्लाइंट हैं. सबसे पहले जब आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे या प्रॉपर एक चीज को प्रॉपरली करना शुरू करेंगे ना, आपका मुंह श्रिंक होगा. मेरा एम्फेसिस ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्स की है ऊपर, सप्लीमेंट्स इन रिगार्ड्स टू, क्योंकि हमें पता है, और इसके अंदर भी बिकॉज आई नो कि आपके मुंह के ऊपर जो वाटर रिटेंशन हुई है या जो फेस के ऊपर फैट आया हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट हम सारों में एक कॉमन है, दैट इज लैक ऑफ स्लीप. हम ज्यादा सोते नहीं है या हमें नींद नहीं आती, और उसकी रीजन ये है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. दैट्स व्हाई आई कीप पुटिंग एम्फेसिस ऑन जिंक. जिंक विल हेल्प यू टू स्लीप. काफी लोग कहते हैं कि यार आप ये कर लो, वो कर लो, ग्रीन टी पी लो, बट जिंक डेफिनेटली हेल्प. कोई भी बेसिक मल्टी वाइटामिन ले लें, या अगर आपने जिंक नहीं लेना, आप किसी भी कंपनी का ले लें. आई हैव दिस, मैंने अभी सामने रखा है, साइट्रॉन न्यूट्रिशन का. दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग नाउ डेज. डिपेंडिंग ऑन जो मेरे पास अवेलेबल है, कभी मैं किर्ट क्लाइंट का यूज कर लेता हूं, कभी मैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का, कभी माई प्रोटीन का. फॉर द पास्ट 2-3 मंथ्स आई बीन यूजिंग दिस. एंड इसके अंदर, एंड मोस्ट ऑफ देम, इसके अंदर क्या है कि आई हैव माई जिंक, आई हैव माई B12, माई फॉलिक एसिड, माई मैग्नीशियम, माई पोटेशियम, माई विटामिन ए, स्पेशली विटामिन डी. क्योंकि बाहर की कंट्रीज में, स्पेशली विंटर वगैरह में, हमें विटामिन डी का बड़ा चक्कर पड़ता है, फिक्की सी हमारी स्किन सी और टोन सी हो जाती है. सो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रियली लाइक साइट्रॉन न्यूट्रिशन के मल्टी विटामिन दैट आई एम यूजिंग नाउ डेज. सो इन अ नटशेल, जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट फॉलो दीज बेसिक थिंग्स दैट विल हेल्प यू. अब मैं देखें,
क्लिक बेट के लिए वीडियो बनानी हो तो मैं ठोक के आपको ऐसी पुटी पुटी एक्सरसाइजें बताता हूँ, आप कहें वाह भाई वाह, मैं भी किया, मेरा भी मुंह अंदर हो गया, सिर्फ चूतिया बनाने का काम है और कुछ नहीं. लेकिन टू सेकंड व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक यू नाउ कनाडा के एक मशहूर तरीन कॉस्मेटिक सर्जन जो कि 30-35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं. अब मैं उनके साथ आपको मिलाता हूं और उनसे पूछते हैं, और वो स्पेशलाइज करते हैं इन चीजों में, फेस वैट वगैरह में, फेस लिफ्ट में, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वगैरह में, कि आपका क्या ख्याल है. लेट्स गेट गोइंग. Hey doctor, how are you? Hey Sunny, how are you? So guys, this is Dr. Hong, one of the best cosmetic surgeons in the country. He has done so many, thousands of surgeries when it comes to cosmetic surgeries. He's an amazing doctor. I, matter of fact, use his expertise and refer a lot of my clients over to him. So Dr. Saab, first thing I wanted to ask you is, how are you? I'm doing good. How about Actually, you know what? I'm standing so far away, you can even pull the mask down if you want. Secondly, what I wanted to ask you is, how long you've been practicing medicine? Well, I've been a doctor for a long time. So I was in my diapers, you started practicing. I wanted to ask you, you know, this video is about face fat, double chin, facelifts, you know, the chiseled jawline. I've done a video before too. We had millions of views on that video. So that's why when I decided to reshoot that video, because a lot of people have asked me, you know, I already covered earlier, okay, you know, it can be high sodium intake, you know, you just gotta lose weight. It can be just fluffiness. It can be maybe you're not sleeping enough. Maybe you're stressed. So I covered all those things, but I have noticed sometimes even people following a diet, they, you know, they're losing weight, but they still have these chubby cheeks and, you know, their jawline is so thick. So, I mean, you're a cosmetic surgeon. You have like tons and tons of years of expertise in this. I just want you to tell me, like, how does this work? Well, Sunny, the surprising thing is fat isn't bad on the face, which is probably a surprise to a lot of people. If you have absolutely no fat on your face, sometimes you look older. However, fat at the wrong place is what people want to get rid of. So if you have fat, let's say in your neck, in the submental area, which is underneath your chin, or what we call the jowls or Mariette line, then it's not good, because those are the fat that normally high up, and as you age it comes down. And also gaining and losing weight is also something that can displace this fat. So it's really about proper dieting, proper exercise, and age gracefully. Okay, and another question that I wanted to ask you is, let's say for an example, somebody who's dieting, he does the diet or she does the diet, she follows the workout, you know, what is a facelift? What is, like, you know, how I've seen a lot of people on television, they get this like chiseled jawline and they don't even work out sometimes. So how does, like, is that a surgery? What do they do for that? Well, chiseled jawline doesn't necessarily mean that you have surgery. Some people are naturally born like that. Okay. On the other hand, if you really do have a lot of excessive fat in those areas, there are different procedures that you can do to try to help that. Sometimes they are non-invasive treatment. There's drugs that you can use like Kabbalah, which actually melt the fat, or ultrasound, intense energy ultrasound that would actually melt the fat. There's specific laser that can help these things, and of course surgery. Sometimes liposuctions can do that. Facelift in general is about lifting the tissues. Also during the procedures, sometimes we employ liposuction to remove the area of fat that aren't in the right place. Sometimes we suspend the fat. We just lift it to where it's supposed to be sitting, rather than removing it. It's a very individual thing, and you shouldn't really think of one size fit all kind of thing. That wouldn't be the right surgery. It should have been a design surgery based on the needs, the problem, and what you're trying to achieve. Awesome. You should really discuss all this with your surgeon.
Very nice. So, guys, you heard it right. You know, the first step should be you follow a diet, you follow a proper protocol, try to exercise it off. Yes, there are procedures. There's so many cosmetic surgery procedures that you can do to get that chisel look. But start off, like I said, like the Dr. Hong said, start off with the basic. Follow your diet, follow a proper fitness protocol or regime. For if you are looking for a cosmetic surgeon and you happen to be in a greater Toronto area, I endorse officially Dr. Colin Hong. You see his information at the bottom of the screen. Give him a call. You can actually use my code I know Sunny, and you get $100 once you get a procedure, a Starbucks gift card as well. Right, Dr. Hong? See, now you're gonna give these people $100 Starbucks card.